Good morning everyone and welcome to the class. We have started the revision of the chapter Executive, and in this we were discussing about types of executive, different types of executive, and in this regard we have seen that there are three types of executive. The first is we can say the presidential executive. The second is semi-presidential executive or semi-presidential system, and the third is parliamentary executive or parliamentary system. Yeah, we also call it a parliamentary form of government, presidential form of government, or semi-presidential form of government. So these are the three types of executive. And in order to understand different types of executive, first of all, we must understand the difference between the head of the government and head of the state. And we have discussed about this difference in the previous class. Head of the state means formal head, the person who is formally the head of the country, and everything which is done by the executive is done on his name. His signature will be there on all the decisions of the executive. Okay, this is head of the state, formal head, है ना? And then the second is head of the government. Head of the government means that executive or that post which is responsible for taking decision in actual practice. Actually, they are taking the decisions, they are making the decisions practically. ओके, उसको हम हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं कि वो जो सही में अपने डिसीजन मेकिंग पावर को यूज कर रहा है. तो यहाँ पर क्या होता है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल सिस्टम और प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव, इन दैट सिस्टम व्हाट वी फाइंड that the same person is head of the state also and head of the government also. The president, okay, president जो होता है presidential system के अंदर, the president is head of the state as well as head of the government. It means कि president is there to take all the decisions of the government, and all the decisions are taken in his name also. He is not only the person who is taking all the decisions, but he is also the person who is putting his signature on all the decisions, because he is the head of the government as well as head of the state. He is the real head, he is the formal head. दोनों हेड जो है वो एक ही पर्सन है, एंड दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. तो ये होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जिसमें कि प्रेसिडेंट जो है वो ऑल पावरफुल होता है, वो हेड ऑफ द स्टेट भी होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है. ओके, और अगर इसी पॉइंट पे हम देखें कि व्हाट इज देयर इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम. इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम व्हाट वी फाइंड दैट parliamentary system, in this system we find that the same person is not the head of the state and head of the government. Both the post is not held by the same person. एक किसी एक को head of the government बनाया जाता है, who is the formal head of the state. ठीक है, वो head of the state. हेड ऑफ द स्टेट जो है वो फॉर्मल हेड होते हैं, जिनके नाम से सारे काम होते हैं. एक्चुअली वो डिसीजन ले या न ले, दैट इज अनदर मैटर, बट एवरीथिंग इज डन ऑन हिज नेम ओनली. ऑल द डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट इज टेकन इन हिज नेम. ठीक है, जो भी डिसीजन लिया जा रहा है उस पर उसके सिग्नेचर होते हैं, उसकी स्टैंप लगती है, उसको हम कहते हैं हेड ऑफ द स्टेट. इट मीन्स कि जो हमारा फॉर्मल हेड होता है. और इसके अलावा दूसरा जो होता है वो होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट.
इट मीन्स द रियल हेड, जो कि एक्चुअल में गवर्नमेंट के सारे डिसीजंस ले रहा है, ठीक है। तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होते हैं, ही इज द रियल हेड। Decisions will be taken by the head of the government. Though it may happen under parliamentary system, it happens कि the decisions will be taken by the head of the government, but those decisions will be taken in the name of the head of the state. ठीक है। और जब हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देख रहे हैं तो वहां पर जो प्रेसिडेंट है वो दोनों ही है, ही इज द हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। This is the main difference between the presidential system and the parliamentary system. And in this parliamentary system, we see variation is there. Like in two countries which have adopted parliamentary system, it is not necessary कि उनके जो head of the state होंगे वो दोनों में एक जैसे ही होंगे. Like if we see the example of UK, United Kingdom, in that country the head of the state is monarch, है ना. monarch जो है वो head of the state होता है. And in this way Britain is not a republic country, है ना. उसको रिपब्लिक नहीं कहेंगे क्योंकि वहाँ पर जो head of the state है, मतलब सबसे ऊंचा जो पोस्ट, फॉर्मली जो सबसे ऊंचा पोस्ट है, सबसे हाई अथॉरिटी की जो पोस्ट है, दैट इज हेरिडिटरी, तो उसको हम रिपब्लिक नहीं कह रहे हैं. तो और अगर हम इंडिया जैसी कंट्री को देखें जहाँ की हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही अडॉप्ट किया है, बट इन आर पार्लियामेंट्री सिस्टम द हेड ऑफ द स्टेट इज द प्रेसिडेंट, है ना. और हेड ऑफ द गवर्नमेंट हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और यूके में भी इसी तरह से हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है. तो इस तरह से पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो ये दो हेड की हम चीज देख रहे हैं, एक हेड ऑफ द स्टेट है और एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट है. अब ये जो हेड ऑफ द स्टेट है वो हर कंट्री में जो जिन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया है वो डिफरेंट हो सकता है. किसी कंट्री में मोनार्क हो सकता है हेड ऑफ द स्टेट, किसी कंट्री में प्रेसिडेंट हो सकता है हेड ऑफ द स्टेट. तो इस तरह का डिफरेंसेस हमको देखने को मिलता है. और अगर हम देखें कि सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो होता है उसमें क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट होता है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर भी ये चीज होती है कि जो प्रेसिडेंट होता है ही इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. तो यहाँ पर भी वो डिफरेंस हमको देखने को मिल रहा था पार्लियामेंट्री सिस्टम में कि हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट अलग अलग लोग होते हैं, वही सेम डिफरेंस जो है वो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में भी होता है कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है और हेड ऑफ द स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट होता है. ओके, सो वी कैन सी अंडर द सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑल्सो द सेम टाइप ऑफ सिचुएशन इज एग्जिस्टिंग. Head of the state is president and head of the government is prime minister. And now we will see other important features of these form of government or these system. So first of all we will see parliamentary system. What is the basic features of parliamentary system? Under parliamentary system we have seen that there are two heads. One is head of the government and the another is head of the state. And in most of the countries, the head of the state is prime minister. A head of the state is president or the monarch, because he is the formal head. He is not enjoying the real power. तो president वो होता है जो कि जिसको हम head of the state कहते हैं, या फिर जो मोनार्क होते हैं वो भी हेड ऑफ द स्टेट में ही उनको रखा जाता है. और दूसरा जो हेड होता है ही इज कॉल्ड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हु इज द रियल हेड, who is there to take all the decisions, who is there to formulate all the policies. Everything is done by the prime minister with his council of minister. तो सबसे जो डिस्टिंक्ट फीचर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इज
two heads of government. And now we will see what are the other important features of parliamentary system. The other important feature of parliamentary system is that the prime minister is the leader of the majority party in legislature. Okay. So first of all, we will see two heads are there in the parliamentary system. Then the second thing is that the prime minister is the leader of the majority party in the legislature. So who becomes the prime minister in a parliamentary system? Who becomes the prime minister? The person, the leader of the majority party in legislature. Legislature में क्या होता है? Legislature is parliament, है ना? तो parliament में जो members बनते हैं, how they become the member of parliament? They become member of parliament by election, है ना? Elections होते हैं, डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज होती हैं, जो भी कैंडिडेट विन करता है इलेक्शन को, ही बिकम्स द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. ओके, तो अब वी हैव द पार्टी सिस्टम. वी कैन नॉट थिंक ऑफ इलेक्शन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टी सिस्टम. तो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, वो अपने कैंडिडेट्स को कंटेस्ट कराते हैं इलेक्शन, और इस इलेक्शन में हम देखते हैं कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को वोट्स मिलते हैं. उसके अकॉर्डिंगली उनकी कंस्टिट्यूएंसीज वो जितने जीतते हैं उस हिसाब से उनको सीट मिलती है. और जो हमारा पार्लियामेंट का जो पॉपुलरली इलेक्टेड हाउस होता है, जिसको कि हम जैसे अगर हम इंडिया को देखें तो उसमें लोकसभा होती है, तो लोकसभा में जो भी मेजॉरिटी पार्टी होती है, जिस पार्टी को 1 more than half सीट्स मिले होते हैं, वो पार्टी का जो लीडर होता है वही प्राइम मिनिस्टर बनता है. ओके, तो जो भी मेजॉरिटी पार्टी है लेजिस्लेचर में, उसके लीडर को हम क्या कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर कहते हैं. ओके, एंड द अनदर थिंग विच इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट is that prime minister is accountable to the legislature. Okay, prime minister is accountable to the legislature. So what are we seeing? Ki there is a relationship between the executive and the legislature in the parliamentary system. In the parliamentary system, prime minister forms the executive. Prime minister is the part of executive. Okay, and now we see that this prime minister should be the leader of the majority party in the legislature. So this is the connection between executive and legislature. They both are connected to each other. Not only this, but the another thing which we find regarding the relationship of the executive and legislature, the thing is कि prime minister is accountable to the legislature, because legislature is the representative body. In legislature we find people's representatives are there. So it is the duty of the prime minister to make them satisfied whatever questions are asked by the members of the parliament. The prime minister and his council of ministers has to give satisfactory answer to all these questions. So this is a kind of accountability. The prime minister is not unaccountable. Whatever he does with his team, that is cabinet, he will have to give answers
to the questions asked by the members of parliament. He is whatever is done by the prime minister, he is accountable for that function, and his accountability is towards the legislature, and in this way the prime minister is accountable to the people of the country, because legislature is the representative body of the common people. ठीक है, तो ये एक हम देख रहे हैं कि this is also showing that there is a close relationship between the executive and the legislature. They are not separate. ऐसा नहीं है कि उनके बीच में कोई भी किसी भी तरह की कोई रिलेशन नहीं है. नो, दे बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर. प्राइम मिनिस्टर वही बन रहा है जो कि लेजिस्लेचर में मेजॉरिटी का लीडर है. फिर जो भी मिनिस्टर बनेंगे उनको ये जरूरी होता है, प्राइम मिनिस्टर प्लस मिनिस्टर्स के लिए, कि वो किसी न किसी हाउस के मेंबर हों, है ना. तो इस तरह से ये एक रिलेशन होता है. इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी होती है. ठीक है, कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो ही इज अकाउंटेबल टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर. ठीक है, तो दीज आर इम्पॉर्टेंट फीचर. 2 हेड्स हैं, और इसमें हम लोगों ने देख चुका है कि जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट होता है, ही कैन बी एन इलेक्टेड पर्सन ऑल्सो, लाइक हमारे कंट्री में जैसे प्रेसिडेंट है, एंड ही कैन बी ऑल्सो, इट कैन ऑल्सो बी अ हेरिडिटरी पोस्ट लाइक मोनार्की in UK. ठीक है, so this is about a parliamentary system, and now we will switch to another system, and that is a presidential system. And we have discussed about this presidential system, that in a presidential system the president is the head of the state as well as the head of the government. The president is head of both. He is head of the state as well as head of the government. Parliamentary system. Oh, it's presidential system. Yes, we have discussed parliamentary system, and now we are discussing presidential system. So in this presidential system, the first important feature of this presidential system is the president is the head of the state as well as head of the गवर्नमेंट. है ना, इसमें 2 हेड नहीं होते हैं, एक प्रेसिडेंट ही दोनों हेड को का काम करता है, हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, and then we see the another feature of this system is the president is in most of the countries इसी system को adopt किया गया है कि presidential system के अंदर the president is elected directly by the people. Okay, so this is another feature, that the president is usually directly elected by the people. Okay, in our country what we find, we don't have any direct election for prime minister. Prime minister के लिए कोई direct election नहीं होता है parliamentary system में. We have elections for the members of the parliament, that is the house which is the representative body of the people. उस house के लिए elections होते हैं, और उस election में जिस पार्टी को majority मिलती है, उस पार्टी का जो leader होता है, he
becomes the prime minister. तो प्राइम मिनिस्टर के लिए डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, बट इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम देयर इज प्रोविजन ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द president. Okay, and moreover what we find that the president is not accountable to the legislature, as we as we have seen that in the parliamentary system the prime minister is accountable towards the legislature, but in this system we see that the president is not accountable to the legislature. The president is not accountable to the legislature. Okay, these are the important features of presidential system. Okay, and now we will see some important features of semi-presidential system. Okay. Semi-presidential system. Under this system also we find that there are two heads. One is the head of the state and another is head of the government. Head of the state is president. President is the head of the state, and then we see prime minister is the head of the government. Okay, then we see that in this system prime minister and his council of ministers are responsible to the legislature. They are responsible towards the legislature. They are accountable towards the legislature, and this accountability is not there in the presidential system. Okay, तो हमने देखा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं, और सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर भी जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ ही इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर. PM and his council is responsible towards the legislature. In this regard, you must remember the example of the countries. जो कंट्रीज हमने डिस्कस किया कि किसके कहाँ पर कौन सा सिस्टम है, दैट मस्ट बी मेमोराइज्ड बिकॉज इट कम्स इन 1 मार्क क्वेश्चन. ओके, तो जैसे सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो श्रीलंका में है, देन फ्रांस में है. पार्लियामेंट्री सिस्टम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इज आवर ओन कंट्री इन इंडिया. Then in UK also parliamentary system is there, and the presidential system is there in US. So these are the important countries where these systems are prevailing. And now we will see some details regarding the semi-presidential system which is existing in Sri Lanka. श्रीलंका में जो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे. एंड वी सी कि in this in Sri Lanka there was amendment in the constitution in the year 1978, and by this amendment what happened that the system of executive presidency was introduced. And what is this system of executive presidency? It means कि under this system of executive presidency
In Sri Lanka, the semi-presidential system is there. Okay, and in this country, we have seen that through the amendment which was done in the year 1978, the system of executive presidency was introduced. System of executive presidency was introduced, and under this system what happens, people directly elect the president. Okay, and we see that under this system it is also possible that both the president and the prime minister belong to the same political party, or it may also happen that they belong to different political party. So under this system of executive presidency, the president is elected directly. Okay, and the post of prime minister is also there, we have seen. And how this prime minister is कैसे प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर का जो यहाँ पर अपॉइंटमेंट होता है, दैट अपॉइंटमेंट इज डन बाय द प्रेसिडेंट. कैसे करते हैं प्रेसिडेंट, किसको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे? द प्रेसिडेंट विल चूज द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द पार्टी दैट हैज अ मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, जस्ट लाइक पार्लियामेंट्री सिस्टम. जैसे हमने देखा पार्लियामेंट्री सिस्टम में यही होता है कि जो भी पार्टी को लेजिस्लेचर के अंदर मेजोरिटी मिलती है, उस पार्टी का जो लीडर होता है उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है, एंड दिस अपॉइंटमेंट इज डन बाय द प्रेसिडेंट ओनली, एंड द सेम थिंग इज अप्लाइड इन दिस सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम आल्सो, कि प्राइम मिनिस्टर वही बनेगा जो कि मेजोरिटी पार्टी का लीडर है, एंड ही विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. बट वन थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज डिफरेंट इन सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम is that under the semi-presidential system we see the president is elected directly, है ना. We also have a president, but our president is not elected directly, he is elected indirectly, है ना. तो ये हम सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात कर रहे हैं, जिसमें कि प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट होता है, एंड प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्रेसिडेंट appoints the leader of the majority party in the legislature as prime minister. Okay, and this we are talking about Sri Lanka. Sri Lanka में जो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वहाँ पे ये कैसे वर्क करता है. ओके, एंड नाउ वी सी दैट मिनिस्टर्स जो हैं उनका भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, एंड दीज मिनिस्टर्स मस्ट बी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट. ओके, मिनिस्टर्स को ये के लिए जरूरी है कि वो पार्लियामेंट के मेंबर हो, एंड द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू रिमूव देम आल्सो. ओके, president can remove the prime minister, president can remove the ministers also, and in this way we see that the president is very powerful, because उसके पास ये power है कि वो prime minister को भी remove कर सकता है. तो इन दिस वे वी सी कि प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट भी है, इज कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस, एंड एक्चुअली ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज ही हैज द पावर टू रिमूव द प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स. ओके, एंड वी सी दैट द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years. उसकी जो टेन्यूर होती है वो 6 years होती है, और प्रेसिडेंट को 6 years के पहले रिमूव करना बहुत ही मुश्किल होता है. उसके लिए बस एक ही प्रोविजन है जिसके अंदर प्रेसिडेंट को बिफोर
कंप्लीशन ऑफ 6 ईयर उसको रिमूव किया जा सकता है, जबकि उसको रिमूव करने का जो रिजोल्यूशन है वो पार्लियामेंट अपने 2/3 मेजोरिटी से उसको पास कर देती है। अगर जैसे कि हमारे कंट्री में भी जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है प्रेसिडेंट के लिए, उसी तरह का ये प्रोसेस है जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। इट इज नॉट इजी टू पास दिस रिजोल्यूशन, ठीक है। और अगर ये जो लेस देन 1/2 ऑफ द टोटल मेंबरशिप से अगर ये पास नहीं होता है और स्पीकर जो है वो इस बात से सेटिस्फाइड होता है कि ये जो एलिगेशन लगाया जा रहा है उस पे इंक्वायरी की जरूरत है या नहीं, तो उसके अकॉर्डिंगली वो डिसीजन लिया जाता है कि ये प्रेसिडेंट को रिमूव करने का जो रिजोल्यूशन है उसको लाया जाए या नहीं लाया जाए। So if the resolution is passed by 2/3 of the votes, then the president will be removed. And if the resolution is passed by more than half of the total members of the parliament, then in that case the decision will be taken by a speaker कि जो भी एलिगेशन लगा है प्रेसिडेंट पे वो उस पर इंक्वायरी होने की जरूरत है या नहीं। इफ ही फील्स दैट yes it needs to be inquired, then that matter will be reported to the Supreme Court by the speaker। तो ये रिमूवल का प्रोसेस है जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। सो वी सी दैट श्रीलंका में जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों का पोस्ट एग्जिस्ट कर रहा है। बोथ ऑफ देम आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इन अ वे प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय द पीपल, और कई बार वो दोनों एक ही पार्टी को बिलोंग कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, और तब ज्यादा सही से काम चलता है, कोऑर्डिनेशन होता है। कई बार वो दोनों अपोजिशन पार्टीज को भी बिलोंग कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है प्रेसिडेंट का वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और उसमें सुप्रीम कोर्ट को भी रोल दिया गया है। और अगर हम इसको कंपेयर करेंगे आगे, अभी हम लोग वी विल स्टडी अबाउट इट कि इंडिया में क्या प्रोसेस है, तो हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का हमारे यहाँ इम्पीचमेंट में किसी भी तरह का रोल नहीं होता है। सो दिस इज ऑल for today.